Good evening everyone. Welcome to Biren Academy. Students, आज तुम नुआ पोएट विषय आम पढ़िया को जाऊँ. ओके, ए पोएट संगे तुम ऑलरेडी फैमिलियर अच्छ. आई एम मे बी पीजीटी सिलेबस अच्छी, टीजीटी रे एक्सेप्टर अच्छी, बट इफ यू सी दिस इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो बेसिकली आज आम पढ़िया को जाऊँ गोटे पोएट विषय. तांको ना कौन होचे? आर्थर मिलर. ओके, किलर मिलर से मिलर नहांती, क्रिकेट वाला मिलर नहांती. एटा हम पोएट्री लिटरेचर मिलर अच्छा. देवीदत्त बेहरा, गुड इवनिंग. अमेरिकन प्ले राइट, एसेइस्ट एंड स्क्रीन राइटर. ओके, स्क्रीन राइटर मीन्स व्हाट? मूवी रे जो स्टोरीज देखती. ओके, तो आंकर किछिटा पोएट्री अच्छी जोटा कि पब्लिक डोमेन रे बहुत फेमस है. ओके, से पोएट्री गुड़ा को आज आम देखा. ओके, मु कहीं एमिली डिकिंसन पूर्वर यहाँ पढ़ाऊँ बिकज बर्नार्ड शॉ गोटे क्लास है स्टाइल ऑफ राइटिंग रो आर्थर मिलर स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत हद तक कॉरेस्पॉन्ड करे. ओके, इट्स वेरी फैमिलियर एंड यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली. ओके, जस्ट सी. ओके, अबाउट द पोएट आर्थर मिलर. आर्थर मिलर 1915 to 2005 was one of the America's greatest playwrights, essayists, and public intellectuals. He is best known for his dramas that explore moral responsibility, the American dream, identity, and social justice. Here arises one question. Okay, here arises a question. What do you mean by American dream? Okay, आमे बहुत थर देखी चुके किछिटा पोएट अमेरिकन ड्रीम ऊपर लिखंती. What do you mean by American dream? It's a concept. अमेरिकन ड्रीम रो कॉन्सेप्ट कौन अच्छी? अब बहुत पोएट रो पोएट्री, बहुत पोएट रो लाइफ, बहुत पोएट रो बहुत सारा आर्टवर्क्स अच्छी जोटा कि अमेरिकन ड्रीम ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट अच्छी. ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अच्छी कि हाउ दे रेस्पेक्ट देयर कंट्री. ओके, तो मेजरली फोकस करते फादरलैंड ऊपर से जिनस को लिखा जाए अमेरिकन ड्रीम. ओके, Miller's work often reveal the struggles of individuals against society, conscience and personal failure. Okay, conscience and personal failures, societal truth, ए सब जिनस ऊपर बर्नार्ड शॉ भी लिखुतिले. ओके, सो इफ यू फोकस कि तांका स्टाइल ऑफ राइटिंग और आर्थर मिलर ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत हद तक कॉरेस्पॉन्ड करे. ओके, जस्ट सी नेक्स्ट स्लाइड. He was also politically active, famously questioning McCarthyism in the 1950s and defending civil liberties. Okay, sorry. एठी गोटे क्वेश्चन आसे कि मैककार्थिज्म कौन अच्छी आउ लिटरेचर रे एमती पॉलिटिक्स रो किछि मीनिंग कौन पई आसिला. मैककार्थिज्म एक पंथ अच्छी, ओके, गोटे वे अच्छी, से जिनसटा लिटरेचर रे केमती आसिला सर? Okay, McCarthyism refers to a period of intense anti-communist suspicion in the United States during the late 90s and late 1940s and 1950s. how ए टाइम रे कौन हैला? गुड इवनिंग दीपिका. ए टाइम रे ही आर्थर मिलर रो जो पोएट्री थिला पीक रे थिला. तो तांको क्वेश्चंस पचारथिले, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पचारथिले कि मैककार्थिज्म ठीक अछि ना नाही. ओके, ए सब जिंस ऊपर बहुत सारा तांकर आर्ट वर्क फेमस है. ओके, though he did not write much poetry, his prose and dramatic monologues. Okay, remember जो poet रो, okay, जो poet रो बेसिक पोएट्री डोमेन रे नहीं से पोएट इंपोर्टेंट है जानते. कौन पाई? अल्प पोएट्री अच्छी मार्केट रे, अल्प पोएट्री अच्छी डोमेन रे, सेति पाई से ता ऊपर क्वेश्चन आसिया चांसेस अधिक हुए. ओके, he was well known for prose and dramatic monologues and deeply lyrical and poetic in spirit. Okay, just see Arthur Miller. Okay, his writing style, his strong use of realistic dialogues and moral conflicts, themes of guilt, betrayal, identity and redemption. Okay, all human emotions upre, a type of human emotion upre, guilt, betrayal, identity, redemption, এই सब ऊपर तांको पोएट्री अधिका फोकस करथिला. सिंपल येट पावरफुल इमोशनल एक्सप्रेशन, फोकस ऑन कॉमन इंडिविजुअल्स कॉट इन लार्जर फोर्सेस. बहुत डीप लाइन अछि, कॉमन इंडिविजुअल कॉट इन लार्जर फोर्सेस. ऑफन एंड्स विथ अ ट्रेजिक डाउनफॉल और अ मोरल अवेकनिंग. ओके, आइदर पूरा भासी जीवो और आइदर अवेक हे जीवो. ओके, ऑफन एंड्स विथ अ ट्रेजिक डाउनफॉल और मोरल अवेकनिंग. ओके, आर्थर मिलर स्टाइल ऑफ राइटिंग देखि दियो, बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ राइटिंग अच्छी. ओके,
See, famous works कौन अच्छी तो देखो डेथ ऑफ द सेल्समैन 1940 a tragic story of Willie Loman and the failed American dream okay এই স্টোরিটাକୁ ଦେଖିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ସିଓର ପଚାରିବି କି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଟପିକର ନାଁ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଫେଲ୍ଡ ଆମେରିକାନ ଡ୍ରିମ୍ ଏ କୋଉ ହିସାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଓକେ ଦ କ୍ରୁସିବଲ୍ a historic drama based on the Salem witch trials also a critic of McCarthyism okay All My Sons 1947 a war profiteering story exploring guilt and justice during World War time रे लिखा ହେଇଥିଲା okay All My Sons are on war okay A View from the Bridge set in the Brooklyn dealing with family immigration and law okay this story basically deals with how immigrants enter a country and what are the conditions what are the problems they suffer okay The Misfits a screenplay written in Marlene Monroe okay तो एतिकी जिनस अच्छी सब लॉन्ग फॉर्म जिनस अच्छी ओके तो यही सब तांकर आर्टवर्क अच्छी जो पोएट्री डोमेन रो अच्छी देखिए सेटा ओके फर्स्ट पोएम इज द मैन हु हैड ऑल द लक ओके देखो जनरली किए जदी लकी अच्छी दैट्स अ गुड थिंग ओके आमे से जिनस को एज अ भलो जिनस एज्यूम करछु okay if someone is very lucky he is getting things easily he is getting all his works done very easily then we call him a lucky person but if a person is very lucky then it is also a burden to him he feels that everything is coming to me very easily mo पाखे सब जिंस easily आसी जाउची तमे गोटे जगह रे लकी थिबो बट लाइफ रे सब मोमेंट जे तमे लकी थिबो तमको लाइफ रो मीनिंग बुझी आसीबनी तमे हार्डशिप जदि देखिन तमे सब जगह जदि लकी अछ तो तुमको लाइफ रो मीनिंग देख माने तमे सेति की बुझी पारिबनी ओके लाइफ विल नॉट टीच यू एनी लेसन तो इन द कोर्स ऑफ टाइम इट विल फील लाइक अ बर्डन ओके कि सब लाइफ रे किछि ना किछि हसल करछंती किछि स्ट्रगल करछंती बट आई एम द ओनली पर्सन हु डजंट हैव टू वर्क okay who doesn't have to do hardships okay so it's a story of a lucky person and how he is fed up of his luckiness कि मुझे लकी कौन पाए अच्छे ओके थिंग्स बहुत सुनिया को अजीब लगुथिबो बट दिस इज द पोएम ओके द मैन हु हैड ऑल द लक ओके about the poem reflects Miller's enduring theme is a success a matter of luck or a moral choice through this piece Miller questions the nature of fate effort and justice in a world that often rewards the wrong people okay he questions the world that in this world the people who are generous who are really hardworking who are really doing hardship who are burning midnight oil okay the nature doesn't cares about them बहुत केस रे कौन हुए बहुत स्ट्रगल जो पिला करथिबो गोटे परे गोटे अटेम्प्ट तारो बाजीबनी गोटे एग्जाम बट गोटे पिलाटा जस्ट विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन से जहाँ पढ़थिबो से जिनसटा आसीबो तारो हेइ जिवो तो इट्स अ मैटर ऑफ फेट इट्स अ मैटर ऑफ लक तो पोएट क्रिटिसाइज करछंती एम्ति लोकन को जहारो किछि वर्क नाही जो माने किछि हार्डशिप करना अछि बट स्टिल दे सक्सेड ड्यू टू द फेट ड्यू टू द फॉर्च्यून It gives a voice to the inner conflict of someone who wonders, why me? Why not others? Okay, so the person who is very lucky, the lucky man, the A man, okay, so what kind of feelings he has? ताऊ केमती फील होते हो कि why me? सब बेले मुही काहे लकी होचे आउ लोग काहे लकी हो नांती तो सेही बर्डन टा गोटे पॉजिटिव जिंस रे भी ता ऊपर बर्डन अछि ओके is God's good fortune a blessing or a burden okay is good fortune a blessing or a burden okay बहुत केस रे कौन हुए कि किंग राजा रो घरे के जन्म हेथिबो प्रिंस हेथिबो ताको सब प्रकार सुख सुविधा थिबो जहा खाया चाहबो तेहा माने से जिंसटा खाई परिबो जोठी जिबा को चाहिबो सेठी जाई परिबो किंतु सराउंडेड विथ बॉडीगार्ड्स तो से फ्री लाइफ से ओपन लाइफ से नॉर्मल लाइफ से माने केबे भी एक्सपीरियंस करि परिबो तो गुड फॉर्चून बहुत टाइम कौन हुए ब्लेसिंग भी अच्छी और गोटे बर्डन भी अच्छी ओके जैसे the man who had all the luck why do the doors open for me why others knock till their hands bleed
why do rains pass me by while others drown in need? Is it luck that walks with me, or a shadow I cannot see? A twist of fate, a trick of light, or guilt dressed in victory? Okay, कौन कौची? Why do the doors open for me? जोठी जो गेट सबू पाई बंद हुए से गेट टा मु आसिले आपे आप ओपन हो जाए. So the gate of luck, the door of luck opens automatically for me, but other people had to work hard until they had to knock the door. Okay, तांको door को knock करिया पड़िबो until their hands bleed. जो पर्यंत रक्त बाहरिबोनी हाथरो सेही पर्यंत तांको hardship. It shows कि मु केते लकी अछि बाकी लोक को सेही जिंसटा को पाइया पई केते हार्ड वर्क करिया पड़े. Okay, why do rains pass me by while others drown in need? Okay, लोक बुड़ी जानती बट रेन वर्षा मोठू साइड है कि चले. Is it luck that walks with me or a shadow I cannot see? ये कौन लक अछि ना या पछाड़े किछि डार्क रियलिटी अछि जो जिंसटा मो संगर चालू छी. A twist of fate, a trick of light, or a guilt dressed in victory? ओके, एटा गोटे गिल्ट अछि मो भितर कि मु जो जगह को इजीली हासिल कर दिए सेटा के लोकटा हार्ड वर्क करछि ताको मिले ने. तो इट मींस इट्स अ विक्ट्री बट इट्स अ गिल्ट ड्रेस्ड इन विक्ट्री. मो भितर गिल्ट अछि बट इट इज कवर्ड विथ अ विक्ट्री. ओके, each morning I wear the smile of kings. Each morning I wear the smile of kings, but in mirrors I see a stranger's face. But in mirrors I see a stranger's face. The road that brought me here was smooth, but others crawl with no embrace. Okay, सबू सकाळे मुठे आई स्माइल लाइक अ किंग, बट जेतेले मिरर देखे मते बिलीव हुएनी कि सही पिलाटा जो एते तळु उठी के एते पर्यंत आसी होला विदाउट एनी टैलेंट विदाउट एनी हार्ड वर्क. द रोड दैट बॉट मी हियर वाज स्मूथ. जो रोड रे मु चली के आसिली से रोड टा बहुत स्मूथ थिला. सेही रोड रे ही लोकन को क्रॉल करी के आसिया को पड़िला. ओके, क्रॉल करी के आसिया को पड़िला. व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड गिव्स क्राउन्स फॉर फ्री? व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड गिव्स क्राउन्स फॉर फ्री? ओके, राजा को जमती क्राउन दिया हुए ताज दिया हुए. ओके, सेही ताज टा ए वर्ल्ड रे लोकन को फ्री रे मिलुची. एंड थॉर्न्स टू दिस हु प्रे एंड थॉर्न टू दोस हु प्रे. ओके, जो माने प्रे करंती जो मान को एक्चुअली दरकार तांको कंटा दिया जाए. इफ लक इज जस्टिस लेट मी फॉल एंड अर्न माय राइज समडे. ओके, जदि लक ही जस्टिस अछि तो लेट मी फॉल. ओके, मते आउ थरे जीरो रु स्टार्ट करिया को दियो. मु तळे जाई कि उठिबे बट निज हार्डशिप रो उठिबे. ओके, राइज समडे. तो एई जिंसटा कहा होइछि कि जो लोक बहुत रिच फैमिली जन्म होते, ओके, बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून, तो सेही लोक पई लाइफ बहुत इजी थाए. बट सेही लाइफटा केबे ना केबे तांको एज अ बर्डन भी फील होबा स्टार्ट होबा. पिला कहबे कि सर एटा की प्रकार कथा, जो लकी अछि ताको काई बर्डन फील होबो. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तुम फील होबो कि एई जगह को आसिया पई एई टाइप रो ऐसो आराम पई एई टाइप ऑफ लग्जरी पई लोक केते कष्ट करसंती आ मते केते फ्री रे मिली गला. ओके, होय नै कि हीरो हीरोइन रो पिला मान कर जो थांती एक्टर एक्ट्रेस पिला से माने ऑटोमेटिकली फिल्म लॉन्च हे जो ऑटोमेटिकली से माने पैसा खाइबे पैसा पाइबे. आमे गोटे 15,000 20,000 चाकरी पाई 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दबो, पीआर राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड, एचआर राउंड, केते प्रकार जिंस अछि. ओके, why do the doors open for me when others knock till their hands bleed? Why do rains pass me by while others drown in need? Okay, stanza wise explanation देखिबा कोन अछि. The speaker questions why success come to him so easily. Others struggle painfully for the same opportunities. He feels protected while others suffer. It expresses conflicted guilt about undeserved success. Okay, तो ताको गोटे गिल्ट अछि मन भितर कि जो सक्सेस से डिजर्व करे नै से सक्सेस ताको मिली जाय छै, एफर्टलेसली मिली जाय छै. तो सेही जिंसटा को सेही गिल्ट को पोएट डिस्कस करछंती. ओके, या बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सैटिस्फाइड विथ एनीथिंग. कहा को लक मिली छै, कहा को सब मिली छै, ताहेले भी से सैटिस्फाइड नै. ओके, ठीक अछि, वेरी नाइस. बट इन वन केस वी कैन बी वेरी सैटिस्फाइड if we believe that what we need and if we do hardship to get it. तम माइंड रा आइडिया क्लियर अछि कि मते कोन दरकार आ मु ता पई चेष्टा भी करछि. से टाइम रे तमे बहुत हद तक कोन हे जीवो
satisfied ହେଇଯିବ. Okay, it's a human soul, it cannot be satisfied. Okay, is it luck that walks with me, or a shadow I cannot see, a twist of fate, a trick of light, or guilt dressed in victory? The speaker wonders if it is really luck or something more complex. He senses an invisible shadow behind his success. Could it be guilt hidden in the illusion of triumph? He suspects that what looks like luck may not be pure or fair. Okay, जो जिनसटा luck जेमती हमको दिसुचे से जिनसटा मे बी luck है भी पारे, but luck dressed in a guilt. Okay, तुम्हें मते कहो the illusion of triumph, this word illusion of triumph, यार meaning कौन अच्छे? Could it be guilt hidden in illusion of triumph? Illusion of triumph from meaning कौन अच्छे? Illusion of triumph, yeah, लिखा है ना? He senses an invisible shadow behind his success. Could it be guilt hidden in the illusion of triumph? Anyone? Illusion of triumph from meaning कौन हुए? Good evening, Sagar Paricha. See, illusion of triumph. Illusion of triumph refers to a deceptive sense of victory or success. Deceptive sense of victory or success achieved, often experienced when external achievements or accolades mask a deeper lack of genuine fulfillment or meaning. Okay, ଯେତେବେଳେ ଆମେ genuinely victory को achieve करनो, okay, success achieve ହେଇନି, but it feels like we have achieved. Okay, खाली खाली victory, सुखिला victory हमको feel होगा, that is called illusion of triumph. Okay, ସେଇ ଜିନିଷଟା poet feel କରୁଛି. Each morning I wear the smile of kings, but in mirrors I see a stranger's face. The road that brought me here was smooth, but others crawl with no embrace. Outwardly he appears successful and happy, but inside he feels disconnected and guilty. His journey was easy while others are abandoned. This reveals inner conflict and moral unease. Okay, ताकू मोरली से ब्रेक हो जाए कि जो जिनसटा लोक केते कष्ट करिकी केते स्वप्न देखि जो जिनसटा चाहिए चाहउछंती सेटा मते फ्री रे मिल जाय छी, एफर्टलेसली मिल जाय छी. ओके, तो से जिनस पय ता इंटरनली ता भीतर गोटे कॉन्फ्लिक्ट चालू छी कि ए जिनसटा मते एते की इजीली मिल गला, जो जिनस पय लोक लाइफ लगे दियंती, हार्डशिप करंती, से जिनसटा मते इजीली मिल गला. ओके, what kind of world gives crowns for free and thorns to those who pray? If luck is justice, let me fall and earn my rise someday. He questions the fairness of the world. Why do the deserving suffer while the luck rise? He longs to earn his place honestly, not through chance. The stanza expresses a desire for fairness, even through struggle. Se kohuchi ki mu ei jaga re asiya ku chahuchi, but through fair means, through struggle mu ei jinsota ko achieve kariya ku chahuchi, that will help me morally. Okay, तो से कहूची कि जिनस मते फ्री रे जहां मिलची, जदि मते आउ थे चांस मिलिबो मु फेयरली जिनस को अचीव करिया चाहिबे, से टाइम रे मते किछि गिल्ट हबनी. ओके, बहुत टाइम एमती हुए पिला बहुत कष्ट करते बट तांको से जिनस मिली पारेनी. जेमती एबे आज रो ही गोटे एग्जांपल देखो, जो तुम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ रो एग्जाम कैंसिल हे गला, जो कटक हाई कोर्ट रो बाहर थिला ना, पिला देले संडे एग्जाम थिला, तापर एग्जाम टा कैंसिल हे गला. एते पिला एते पैसा पकेले, टाइम पकेले, पैसा छाड़ो, टाइम देले, स्वप्न देखिले कि एथर एग्जाम टा भलो हेछि, एथर सियोर हे जिवो, बट स्टिल कैंसिल हे जाए. तो ए सब बहुत दुखद जिनसटा. ओके, और जो स्पोर्ट्स कोटा जो माने प्लेयर अछंती, नथिंग अगेंस्ट देम, कि ओटे मो देखली स्पोर्ट्स पर्सन को एजुकेशन रो डिपार्टमेंट दिया है, से निजे एजुकेटेड नो बट ही इज हैंडलिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट. सो जो लोक से जिनस डिजर्विंग नहांती तांको से जिनसटा दिया है. आम केतेटा मिनिस्टर 10th पास भी न थांती, 12th पास भी न थांती, बट स्टिल दे आर एजुकेशन मिनिस्टर. तो एटा दुर्भाग्य ही अच्छे आम कंट्री रा कोन अच्छे. ओके, तापर देखिया समरी. दिस पोएम एक्सप्लोर्स द इमोशनल वेट ऑफ unearned success. The speaker is haunted by the ease with which fortune comes to him while others suffer. He questions the fairness of fate, luck, and social justice. Though successful, he feels undeserving.
lost and guilty. In the end, he expresses a wish to earn his place through effort, not by chance. The poem is a deep moral reflection of on privilege, justice, and self-worth. Okay, ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତା ବାପା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର, ହି ୱାଜ୍ ଅ ସର୍ଜନ, ତ ସେ ପାଠରେ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ସବୁ ତା ପାଖେ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ସେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିବାଟା, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ତା ବାପା ତାକୁ ଗାଲି କରିବେ, କିଏ ହବନି ହବନି, ଦିନ ସାରା ଟ୍ୟୁସନ୍, ଦିନ ସାରା ଟ୍ୟୁସନ୍। ମୁଁ କହିଲି ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତୋ ପାଖେ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ମୁଁ ତୋର ଯେମିତିଆ ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ସବୁଦିନ ଖାଇବାରୁ ଉଠିବାରୁ ସବୁ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ବିକଜ his father wants to make his son of that level, ଓକେ, ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏତେ ଲକି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛୁ, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ବାର ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଲୋକ ଭିତରେ ବି ଗିଲ୍ଟ ଥାଏ କି ମୁଁ ଏଇ ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ପଢ଼ିବାରେ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛ, କାହା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛ, ଓକେ, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ପୋଜିସନ୍ ନାଉ। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। This message, oh sorry, theme or message: luck is not always a blessing, it can be a burden. Okay, the world often rewards the undeserving and punishes the good. Okay, जो माने undeserving अछंती तांको बहुत टाइम जिनसोटा मिल जाए, ओके, पोजीशन ता मिल जाए जोटा ପାଇଁ ଲୋକ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। True fulfillment comes from earned success, not accidental privilege. People who receive everything without struggle may feel lost or empty inside. A just world is one where success is linked to effort and virtue, not chance. Okay, chance ରୁ କେବେ ବି सक्सेस मिलेनी, it needs effort. ଯେମିତି ତମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବେ, he is a very good leader, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ବି ଥିବ, but he is not performing that good जोटा कि तांको फैमिली हिस्ट्री थिला। तो लोक सेही जिनस ऊपर जज करे, तमर तो ये भी थिले पीएम थिले, तम मम्मी पीएम थिले, तम ग्रैंड मदर पीएम थिले, फादर देन मदर, यू आर नॉट परफॉर्मिंग, तार ऊपर केमती बर्डन थिबो। ओके, तो बहुत टाइम लक गोटे ब्लेसिंग नहीं, बहुत टाइम इटा बर्डन भी अच्छे। व्हाट इज द मेन इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम? जॉय, प्राइड, गिल्ट एंड कंफ्यूजन, एंगर। को टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ए पोएम रे शो करा है? Which type of expression is shown in the poem? Main emotional expression shown in the poem. Yeah, anyone? Okay, that is guilt and confusion. Okay, very nice. Kenandi. Okay, see next question. Okay, what does the speaker question in the first stanza? His education, why he works hard, why he is lucky while others suffer, why he is alone. Okay, very nice. See, why he is lucky while others suffer. Okay, very nice, Deepika. Okay, what does a shadow I cannot see refer to? A person following him, a hidden force behind his success, a fear of death, a ghost from his past. Okay, Sagar, ठीक अच्छी. Okay, what does a shadow I cannot see refers? A shadow I cannot see. A shadow I cannot see. Yeah, Deepika, very nice. A hidden force behind his success. Sagar, ठीक अच्छी भी. तापरे, why does the speaker feel? How does the speaker feel when he looks in the mirror? Strong and proud, like a stranger, like a hero, confused and happy. से मिरर रे देखिया टाइम रे केमती फील करे निजको? Yeah. Yeah, anyone? Okay, mirror रे कहला ना कि every day I smile like a king, but I feel like a stranger when I see a mirror. Okay, he feels like a stranger. Very nice. Okay, B hobo. What is the meaning of crowns for free? Royalty, money, success without effort, a new job. Okay, crowns for free. बहुत लोगों को they are born in a silver spoon. तांको crown, राजगद्दी, luxury, free रे मिले. Okay, success without effort. Very nice.
Why does the poet mention thorns to those who pray? To show punishment to the wicked, to highlight unfair suffering of good people, to celebrate religion, to show karma. जने दीदी से 7 टाइम एग्जाम देले ପରେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ବଟ୍ ନାଓ ସି ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର ଭେରି ନାଇସ୍ ଓକେ 7 ଥର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି 10th ର ବଟ୍ ଏବେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଡେଡିକେସନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଭେରି ନାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅନଫେୟାର ସଫରିଂ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଯାଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ କାହାର ଚିହ୍ନା ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ବି ସେମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହଉଥିଲା ଆଗ କାଳରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଟା ତ ଅନଫେୟାର ନା ଓକେ then second poem देखियो the silence between us okay the silence between it's a very nice poem देखिए okay about the poem this poem explores a powerful theme found throughout Arthur Miller's play the silence that follows moral failure or avoidance of truth. It reflects the inner tension people feel when they avoid saying what needs to be said. Whether out of fear, guilt, or shame, the poem addresses how this unspoken truth slowly erodes relationship, identity, and self-respect. କୋଉ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ହିଚକିଚାହଟ ହଉଛି ହେଜିଟେସନ ହଉଛି ଗିଲ୍ଟ ପାଇଁ ହଉଛି डर कन्सिक्वेन्स होची से जिनसटा को भी रिलेशन हो माँ बापार रिलेशन हो ओके ब्रदर सिस्टर रिलेशन हो किछि भी हो जदि मझिरे किछि कथा अछि से जिनसटा रिलेशनशिप को केते भी स्ट्रांग रिलेशनशिप को इरोड कर दिए खराब कर दिए ओके ब्रेक कर दिए ठीक अछि ओके द साइलेंस बिटवीन ओके बहुत टाइम कौन हुए आमे जते बेले कहाटू मन भेद हो जाए कहार संगे आमको घरे भी बहुत टाइम कौन हो बापा संगे किसी हो जाए कौन मम्मी संगे किसी हो जाए कुहा कोई हो जाए चुप चुप हो जाते ओके तम मन रे मिलियंस ऑफ थिंकिंग थी मिलियंस ऑफ थॉट थी तांको मन रे भी सेम जिनसटा बट से जिनसटा बसिक जतले आमे सॉल्व करतबा ना तो दैट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट हमर इंडियन फैमिली रे से सिस्टम ही नाही कि बसिकी कथा हबा को जिनस ऊपर ओके तो ये जिनसटा आम जनरेशन पर आउ हबनी जमती आमे ट्राई करिबा किछि भी असुविधा अछि बॉय चाइल्ड हो गर्ल चाइल्ड हो जते तुम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिवनी ओके कि किछि स्कूल रे इश्यू होछि किछि पाठ पढ़ा इश्यू होछि आम पेरेंट कोन कहंती पढुनो तोर होउनी अरे किछि मोरल सपोर्ट तो एटलीस्ट दियो तार पुअर तो हेई गला तुम तो 4 वर्ष बसि तुम पुओ कोन एते वर्ष बसिलानी घरे बसि पढुछि कोन होउनी ओके तो कन्फ्यूजन्स मझिरे किछि कथाटा जेमति नथिबो एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट ता ऊपर एटा पोएम अछि ओके इट वाजंट द शाउटिंग दैट ब्रोक अस बट द साइलेंस बिटवीन अस साइलेंस बिटवीन ओके इट वाज नॉट द शाउटिंग दैट ब्रोक अस ओके पार्टी करिकी ताना दोचंती सेटा देबे एक्चुअली कोन ना ए आम बापा मारो भी भूल नाही दे बिलोंग टू द जनरेशन एक्चुअली कौन थिला ना आम ग्रैंडफादर मोस्टली चाषीबासी थिले तांको पेरेंट तो ऑब्वियसली चाषीबासी थिले ओके तो आम ग्रैंडफादर बहुत पोवर्टी देखिछंती मिडिल क्लास कोची पोवर्टी देखिछंती तो से माने ना हार्डली बिहेव कले तांकर छुआ संगरे कि यार तू जदी न करबी तू भी एई चाषीबासी गाँ बिलो चाष रे ही रहिबो तू टिके ट्राई कर तू टिके कोन गोटे कर तो से माने बहुत कष्ट करी कि भुवनेश्वर कटक टिके मेगा सिटी को आसे किछि ना किछि रोजगार कले बहुत पिला कष्ट करी पुलिस पाइले एबे से हार्शनेस जहाँ से माने कंटिन्यू करथिले तांको पय पेरेंटिंग से आ कि मु जदी ताना आकु देबी आकु टिके हार्श कथा कहबी या भीतर गोटे फायर आसीबो ये काम करिया स्टार्ट करियो बट आमर वर्ल्ड सेमती नुह ना आम टिके आगो को आसी जाइछु से जनरेशन पार हो जाइछे आमे बहुत स्कोप पाई जाइछु बहुत जिंस अवेलेबल हो जाइछे आम पाकर त हमकु सेटा बर्डन लागे कि मो माँ बापा मते काई एमती कोछंती दे हेट मी आमे इस जिंसटा भाबुछु बट बिलीव मी कि सेमती ना तांकर पेरेंटिंग ही से माने सेमती गुलु गुलु से माने देखि ही नांते जो 80s रो पेरेंट थिले 90s 87 88 89 90 जहारो मैरिज है से मान को पेरेंटिंग ही से ओके तो से माने सेमती ही ताना देकी ही कथा हेबे ओके
The words we swallowed, heavy as stone, still lie buried unseen. Okay, যেটা shouting ନଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମକୁ break କଲା, it was silence. ତମେ ମୋଠୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲ, ମୁଁ ତମଠୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି. This, the words we swallowed was heavy as a stone. ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଏତେ ହେଭି ଥିଲା ଗୋଟେ ପଥର ଯେମିତି, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଲୋ କରିଦେଲି. ଓକେ, ଗିଳିଗଲି. Still lie buried unseen. ସେ କଥାଟା ଏବେ ବି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି. You looked at me like a question once. କିଛି ପଚାରିବା ଚାହୁଁଛୁ, but I blinked and turned away. ତମେ ମୋତେ ଅନେଇଲ ଯେମିତି କିଛି ତମେ ପଚାରିବା ଚାହୁଁଛୁ, but ମୁଁ blink କଲି ଆଉ ଟର୍ନ ହେଇଗଲି. Now the answer roars in attic of time, but ସେଇ ଜିନିଷର answer ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛି. Feeding more every day. Okay, ସେ ଜିନିଷର answer ଏବେ ବି ଅଛି. Okay, next ଦେଖ. I could have spoken and so could you, but pride sat in our chair. ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, but ସେ pride, ସେ ego ରହିଗଲା. We ate our meals with hollow mouths, pretending not to care. The storm was loud, the tears were real, but the damage came so slow. Not in fire, but in the hush, where only the cowards go. Okay, ପଢିବା stanza by stanza କ'ଣ ଅଛି? It was not the shouting that broke us, but the silence between. The word we swallowed, heavy as stone, still lie buried unseen. Conflict is not caused by argument, but by words left unsaid. Okay, argument जो शब्द तमें कही देइछो से जिंस केबे भी कॉन्फ्लिक्ट करे नहीं, से जिंसटा क्लियर करे. ओके, बट जो जिंस तमें कही न, साइलेंस हे गलो, से जिंसटा कॉन्फ्लिक्ट क्लियर करे. Unspoken emotions and truths are like stone inside us, slowly weighing us down. आओ दिनों को दिनों heavy हे चालुचे. ओके, जो जिंस तमें कही पारलनी, जो कथाटा कही पारलनी, they were as heavy as stone. आओ दिनों को दिनों से stone टा heavy हे चालुचे. एमती हुए लाइफ रे किसी कॉन्फ्लिक्ट जे आमे काउ किसी कहिया थाए कहि पारुनु. ओके, सेटा हेवी हे चले. These words remain unseen but damaging. ओके, एक शब्दटा आमे केबे माने बहुत टाइम होला परे भूली जाउछु, बट भितरे सेटा हमको बहुत डैमेज करे. ओके, You looked at me like a question once, but I blinked and turned away. Now the answer rots in the attic of time, fading more every day. The speaker recalls a moment where communication was possible, but they avoided the opportunity. Now that unspoken truth is fading and decaying like a forgotten item in an attic. It expresses regret and emotional distance. Okay? गोटे पुराना जिनस आम जमी भूली जाऊँ गोटे जगह को रखिकी से धीरे धीरे खराब हवा स्टार्ट हुए, धीरे धीरे इरोड हवा स्टार्ट हुए. सेमती जिते आम पाखे चांस थिला आमे कथा हे पालुनी. ओके, इगो देखैलु, एवॉइड कलु दी जण. ओके, बट एबे से जिनसटा आम भितरे इरोड होची, से कथाटा भितरकू ओके बढ़ी चलुची. I could have spoken and so could you, but pride sat in our chair. We ate our meals with hollow mouths, pretending not to care. Both people in relationship had the chance to speak, but pride and ego kept them silent. They went through daily life pretending all was normal while emotionally empty. Their connection became superficial and lifeless. Okay? भितरे भितरे जदि साइलेंस थिबो, कथा हबनी. ओके, धीरे धीरे कौन हम रिलेशनशिप दूर दूर को पड़ेगा. ओके, आई एम नॉट ए रिलेशनशिप एडवाइजर, बट जहाँ पोएम लिखाई. ओके, सबुदिन सेमती है, मो खाया खाइली, तुम भी खाया खाइल, सेम जिनसटा है, आम प्रिटेंड कलु आम दी जन केयर करूनु. ओके, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट, आई एम नॉट केयरिंग अबाउट यू, यू आर नॉट केयरिंग अबाउट मी. बट धीरे दिन को दिन कौन है, से जिनसटा भितर को बढ़ी चलिला, आ कनेक्शन जहाँ थिला सेटा फेड हबा को स्टार्ट हो गला. ओके, दैट बिकम सुपरफिशियल. सुपरफिशियल मीन ऊपर ऊपर थिबा. ओके, आउ डीप नाइ से रिलेशन जेमते तुम पाए फील करथिले. जेबे तुम साइलेंस हो गल, कथाटा मत जहाँ कहया थिला सेटा कहलनी, मु तुम कहूनी. ओके, आम भितर गोटे कौन है गला, फिल्टर आसीगला. सेबेठू आम जो हार्ट जो रिलेशन थिला धीरे धीरे सुपरफिशियल हो गला, ऊपर ऊपर खाली हेलो हाय वाला रिलेशन. ओके, the storm was loud, the tears were real, but the damage came so slow. Not in fire, but in hush, where only the cowards go. Even though fights happened and emotions were intense, the real destruction came quietly over time, not through dramatic explosion, but through fearful silence. Cowardice, not courage, lives in this hush, its moral failure by avoidance.
ओके से कौच गोटे कावर्ड जमती हमको हेक रहा ना लाइफ रे कावर्ड माने कौन कहते सिचुएशन को रन करके पड़ाते ओके जोठी किसी खराब सिचुएशन किसी चैलेंजिंग सिचुएशन हम से सिचुएशन टू अवॉइड करके पड़ेबे तो जस्ट वी बिकेम कावर्ड ओके आमे कावर्ड ହେଇକି ଯେମିତି ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ ନିଜ ନିଜଠୁ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯିବୁ ସେଇ ସାଇଲେନ୍ସଟା एट अ टाइम फायर जमती आसबनी बट स्लोली स्लोली गोटे जिनसको दी जन को रिलेशन को ब्रेक करदेव से रिलेशन कोटा भी हो पारे पेरेंट रो भी हो पारे ओके तुम स्पेशल वन रो भी हो पारे हस्बैंड वाइफ रो भी हो पारे माँ बापा रो भी हो पारे किसी भी रिलेशन हो पारे ऑफिस रे भी हो पारे ओके तुम्हें को स्टाफ को अवॉइड करिया स्टार्ट करिवो ताको लाइक काई मते अवॉइड करछि से भी अवॉइड करे बट धीरे धीरे तुमर रिलेशन पूरा खट्टा हो जिवो तापरे अगेंस्ट कथाबार्ता स्टार्ट हो जिवो ओके तो सब बेले जिनसटा क्लीयर करवा निज आडू इनिशिएटिव नेले आमे छोट हो जीवनी ओके एटलिस्ट वी कैन ट्राए बहुत टाइम कौन हुए पॉजिटिव रिएक्शन आसे बहुत टाइम झगड़ा हो बट स्टिल पॉजिटिव हो जिवे रिलेशनशिप एमती जिनस अच्छी ना कहार संगे संबंध एमती जिनस अच्छी कि तुमको किसी मिलबनी पैसा पत्र किसी मिलबनी जस्ट यू आर हैविंग समवन इन लाइफ यू नो सम पीपल इन लाइफ और ସେଇଟା बहुत इंपोर्टेंट लाइफ रे बहुत एकला लोक को भी आमे देखिबु 40-45 इयर्स हे जिवे एकला रही कि एलोन रही कि जस्ट वन तांको बेडरूम थिबो सेठी जिवे ऑफिस जिवे काटो कथा नहीं रूम को आसीबे तांको लाइफ टा केते माने डेंजरस हे जाय तमे जानि पानो से माने बहुत डेस्परेट हे जानते कि मते कोई फ्रेंड हबो मते को फ्रेंड हबो ओके द सेम टाइप ऑफ लाइफ हमो करिया नहीं ओके गोटे बही अच्छी हाउ नॉट टू डाई एलोन से बही रे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कराई गोटे एज रे आसिकी 40 इयर्स 45 इयर्स से गोटे जणे अच्छी लाइफ टाइम पाठ पढ़े लाइफ टाइम जॉब को देला बट कहार संगे रिलेशंस मेंटेन कलानी मैरिज कलानी ताको रिलेशंस डर लाउथिला ही वाज थिंकिंग दैट रिलेशनशिप ओनली गिव्स पेन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स ताको माँ बापर किसी झगड़ा होता बहुत छोट बेले से देखी तो ताको भी चाइल्डहुड रु से जिन देखला कि झगड़ा होची माँ बापा गोटे ये रिलेशन भल नुह तो केबे भी गोटे मैरिज गर्लफ्रेंड किसी नथिला लाइफ रे किसी फ्रेंड्स नहांती जो मैं ताको पेन दे पारिबे लेटर कौन है जो से 40s रे आसिला ताको कहार नीड महसूस है जो पाखापाखि देखिला हैप्पी फैमिलीज जो सांग माने कॉलेज रे थिले से माने पोस्ट करिया स्टार्ट करे के दीटा छुआ तीनटा छुआ से टाइम में से एकला हो गला तापर ताको सुइसाइडल टेंडेंसीज आसीबा स्टार्ट हो गला तो सुइसाइडल टेंडेंसी से बाहर को केमती आसीबो गोटे डॉक्टर को देखले डॉक्टर कहला कि मतलब जो साइकोलॉजिस्ट से कहला कि तुम प्रिटेंड करिया स्टार्ट करो कि तुम फैमिली अच्छी तुम किचन तुम वाइफ कुकिंग करुच्छी तुम छुआ मैंने स्कूल जाइछंती तुम स्कूल जाओ कहा को पिकअप करो ना करो बट स्कूल जाओ तो तुम मेंटल सिचुएशन टिके वेल हो जीवो ऑफिस रे मिछ कह कि तुम वाइफ अच्छी ये अच्छे कि न पछाड़ले भी एक्साजरेट करी कह तो से लोकटा से कहला बहुत दिन जाए ये जिनसटा ठीक ठाक चलला से हैप्पी फील करिया स्टार्ट कर देला बट इवेंचुअली लोगों को जना पड़गला दैट ही वाज लाइंग ही वाज क्रिएटिंग हिज ओन वर्ल्ड तापर से लोकटा सुइसाइड कर देला जेते सब को तार मिछ जना पड़ला कि ये तापर लोक तो साइको को स्टार्ट कर देले कि ही इज क्रिएटिंग हिज ओन वर्ल्ड तो लाइफ रे आमे जदी एकला रहिबा गोटे ना गोटे पार्ट ऑफ टाइम रे हमको रिलेशंस रो नीड आसीबो माँ बापा रो नीड आसीबो भाई भौणी नीड आसीबो ओके गुड पीपल जो हमको सब जिन सपोर्ट कर तांको नीड आसीबो ओके तो रिलेशनशिप्स आर वेरी मच इंपोर्टेंट छोटो मोटो कथा छोटो मोटो डिस्टर्बेंस पाई रिलेशनशिप को ब्रेक करवा वाइड डिसीजन नहीं सामना वाला लोक जदी बुझिया नहीं बापा माने सेमती बुझंती नहीं ओके पेरेंट जल्दी बुझिबेनी तुमको निज आड़ जाय कि आमे जदी इनिशिएट करे आमे छोटो हे पानी ओके बट से रिलेशन हमको लाइफ लॉन्ग बहुत स्ट्रेंथ दबो ओके तुमको घरे ड्यूटी पर कि जदी पचारुची कि तुम भल अच्छ ना नहीं खाई ना नहीं देन यू आर वेरी लकी बहुत लोगों को पाखे नहांती से जिन सब आम कंट्री रे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे माँ बापा संगे आम पर लाइफ टाइम माने 40-50 जो पर्यंत से माने मरी जीवनी से पर्यंत आमे तांको संगे कनेक्ट होछि फॉरेन कंट्री सेमती ना से माने छाड़ी के पड़ांती माँ बापा को ओके so it's a very moral support summary the silence between is a deeply emotional poem about emotional distance missed chances and the cost of unspoken truth Arthur Miller explores how pride and fear stop people from saying what matters. Instead of confronting pain or truth, people choose silence. And that silence slowly destroys love, trust, and identity. Both are The poem is filled with regret and it serves as a warning against avoiding honest, okay,
communication. Okay. Theme: emotional silence can be more damaging than conflict. Truth, when buried, becomes poison, leading to loss and regret. Pride and fear often prevent healing and communication. Relationships suffer when people refuse to speak their truth. The poem calls us to the face discomfort with honesty, not silence. Okay, discomfort ଯଦି ଅଛି ବହୁତ ହୁଏ ବାପା ଆଉ ପିଇସି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଓକେ ଅଙ୍କଲ ମାନେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଯଦି ଇନିସିଏଟ୍ କରିବେ ନା ଏଇ ଲୋକ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଲେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଉଥିଲେ, ତ ଇନିସିଏଟ୍ ଯଦି କରିବେ ନା କିଏ ଛୋଟ ହବନି, ବଟ୍ ସେଇ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଛି ଭିତରେ ଭିତରେ, ଓକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କଥା, ବଟ୍ ସେଇ ପ୍ରାଇଡ୍ଟା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାନି, ତା ପାଇଁ କେତେଟା ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି ଦେଖ। ଅନେଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଫେସ୍ କରିବା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଓକେ, MCQ: according to the poem, what truly broke the relationship? Argument, silence, money issue, distance. ओके, କୋଉ ଜିନିଷଟା actually ଗୋଟେ relationship କୁ break କରିଦିଏ? Which thing actually breaks a relationship? ओके, साइलेंस और सबू पाखरे से आर्ट न था गोटे रिलेशनशिप को बंचेया ପାଇଁ। ओके, अमजोला क्रिएटिविटी वेरी नाइस, दैट इज साइलेंस। ओके, वेरी नाइस साइलेंस। दीपिका साइलेंस ठीक अच्छी, सागर ठीक अच्छी। तापरे व्हाट आर द वर्ड्स वी स्वॉलेड कंपेयर टू फ्लावर्स, वेपन्स, स्टोन्स, मिरर्स? को जिनस टू कंपेयर हेची? Words we swallowed is compared to flowers, weapons, stones, mirrors. को जिनस टू कंपेयर हेची? Tell. Words we swallowed, नाई दीपिका भूल अच्छी, that is compared to stones. कहला ना कि जो वर्ड्स मो भितरे रखी देली गिली देली से जिनसटा गोटे पत्थर जेमती अच्छी, एते बड़ वर्ड्स अच्छी और सेटा धीरे धीरे तार वेट बढ़ी चलुची। ओके, तो स्टोन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। What does the speaker mean by "you looked at me like a question"? They were asking something out loud, they looked confused, they wanted communication, they were angry. Yeah, किसी नहीं, no problem. Yeah, they wanted a communication. Very nice, Deepika. गोटे communication चाहूଥିଲେ, she looked at me, okay, like a question. बहुत टाइम हुए हमें लास्ट टाइम जाओ कथा हुए से लोक भी चाहे कि रिलेशन ब्रेक होने तमे भी चाहिए, बट हे जाए कौन करिया, गैस लाइटिंग चालू से आजिकल रिलेशन रे। Where does the speaker say the answer is now? Where does the speaker say the answer is now? In a drawer, in an attic of time, lost in the wind, hidden in books. Okay, very nice. See, in the attic of time से कहे ना कि जो आंसर्स थिला तमे जो क्वेश्चन पचारलो तार आंसर्स एटिक ऑफ टाइम, ओके बहुत पछाड़े मो से टाइम रे छाड़ दे छे। ओके, व्हाट इमोशन सैट इन आवर चेयर? लव, फियर, प्राइड, होप? ओके, आम जगह आमको कम्युनिकेशन करिया पय को जिंसटा मना करथिला, को जिंसटा आमको बांधुथिला, बाधा क्रिएट करथिला, को जिंसटा आमको स्टॉप करथिला? ओके, आमर प्राइड, लव, फियर, प्राइड, होप? फियर, फियर हम देखिए देखो। ओके, एटा तो अलगाटा ता पूर्वटा। देखो देखो, but I blinked and turned away. Now the answer rots in the attic of time, fading more away. Okay, okay. But pride sat in our chair. Okay, को जिनसटा चेयर रे थिला, I could have spoken and so could you, but pride sat in our chair. तमे भी ये थिलो कि मु मोर रेस्पेक्ट काहे कमे कि आगो को जीवित, आ मु भी से भाबुथिले, तो प्राइड सेट इन आवर चेयर। ओके,
को नंबर हाँ pride sat in our chair option C. Okay, next देखो. What is meant by hollow mouth? Hunger, pretending to be okay, talking too much, laughter. What is meant by hollow mouth? Hollow mouth. A context रे hollow mouth ର meaning कौन ଅଛି? Okay, pretending to be okay. Very nice. Okay. तापरे poem number 3rd. Ashes on the ledger. The end of past accounts, debts or judgments. Okay. Ashes means what? Rak. Paus जो ଆମେ କହୁଛୁ. And what do you mean by ledger? Ledger means any record, okay, about past debts, okay, जो बाकी खाता बनाती दुकान रे ताकू निया लगे दबा ashes of the ledger. Okay, तो मु जत्ते की past record रखी थिले कहा को जज करथिले डेब्ट थिला से जिनसडा को निया लगे दबा. Okay, तापर देखो. About the poem reflects Miller's classic theme, the conflict between material success and moral constraints. It's an important poem. The speaker, likely a businessman or a worker, looks back at the choice made for profit, status, or convenience, and the spiritual emptiness those choices left behind. The ledger is both a financial account and a moral record, now stained with metaphorical ashes representing regret, guilt, and the cost of betrayal. Oof. Okay, से देखो कि से जो लेजर अच्छी जोटा से रेकॉर्ड लिखी से लेजर टाकू एबे निया लगेतला कोन पे लगेला पोएम रे देखो. The figures added up just fine. The paper stamped and clean. The money came like summer rain, fast and cold and mean. से कहूची जते फिगर्स ऐड हैला मोर फिगर्स मींस व्हाट जते की मनी जते की करेंसी ऐड हैला added up just fine. The paper stamped and clean. Okay, paper jete ki mo rakhe jete record means that were all stamped and that were all clean. Okay, means well maintained. The money came like summer rain, fast, cold and mean. Okay, I shook the hands, I closed the deals, my shoot pressed, my smile set. But every yes I sold too cheap, I never could forget. Okay, my children speak in softened tones, their eyes unsure, polite. They saw me weigh my soul for gold and turn away from right. Now in quiet of my chair, the numbers blur and fade. Ashes on the ledger lie where profit once was made. Okay. देखो बहुत deep poem अच्छे बुझिबा. The figures added up just fine. The paper stamped and clean. The money came like summer rain, fast and cold and mean. The speaker had material success, organized accounts, legal approval and income, but the money felt emotionally empty, cold and harsh despite its speed. Summer rain represents sudden but unfilling profit. Okay, summer rain खरा दिन जेतले वर्षा हुए that is that represents any sudden change. Okay, से कहूची कि the speaker is a businessman earning a lot of money. Okay, से कहूची कि I had a lot of material success but something empty is still within me. Okay, किछि कोटे खाली मते फील होची मो पाखे पैसा अछि, ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट अछि, लीगल अप्रूवल अछि, इनकम अछि, बट किछि मते कोल्ड फील हुए, मीन फील हुए भितरो. ओके, कोल्डनेस आसे कोटे मीननेस आसे. ओके, it is as fast as the summer rain. Okay, I shook the hands, I closed the deals, my shoots pressed, my smile set. But every yes I sold too cheap, I never could forget. He played the role of a successful professional, yet deep down he knows he compromised his values for gain. Every easy yes given for money now feels like betrayal. The guilt remains long after the success fades. Okay? से कौची कि मु जेतिकी जिंस जेतिकी लोक को बिकिले से जिनस मते मनी तो आनी की देला पैसा तो आनी की देला बट मो भीतर गोटे गिल्ट आसीगला. जेते थर मु गोटे डील को यस कली सेते थर मो भीतर गोटे गिल्ट आसीला. मनी सरी गला पैसाटा यूज हो गला बट से गिल्टटा मो भीतर अछि. को जिनसर गिल्ट. ओके देखो, I shook the hands, I closed the ray, my suit pressed, my smile set, but every yes I sold too cheap.
I never could forget. Okay, se kochi mu jette thar yes koichi that given me money now feels like betrayal. Yet deep down he knows that compromised his values for gain. ଯେତିକି ମୋ values ଥିଲା, okay, କାହାଠୁ extra money ନେଇଛି, okay, ବିଜନେସମ୍ୟାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ଚିପ୍ରେ ନେଇକି ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟର ସୋଲ୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କ valuesର againstରେ ସେ ଜିନିଷ ଗଲା, ଯେତେ ଥର ସେ yes କହିଲେ that was a cheap yes because the person purchased his values, his morals. Okay, ତ spiritually poemଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା. My children speak in softened tones, their eyes unsure and polite. They saw me weigh my soul for gold and turn away from right. His family is emotionally distant, respectful but unsure. They witnessed his moral compromises. They saw him choose money over honesty or justice. The emotional bond and respect have weakened. Coach, ମୋ family जो ଅଛି, they are just looking my soul as a gold. Okay, कि ମୋ justice टाको ମୋର जो moral values ଅଛି ତାକୁ ପଇସା ପାଇଁ compromise କରୁଛି. ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ମୋର ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ୱିକ୍ କରିଦେଇଛି. କେମିତି କି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ମନି ପାଇଁ କିଛି ବି କରନ୍ତି, ଓକେ, ପଇସା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ. ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୋନ୍ସ, ଦେୟାର ଆଇଜ୍ ଅନସିଓର ପୋଲାଇଟ୍, ଦେ ସ ମି ୱେ ମାଇ ସୋଲ୍ ଫର୍ ଗୋଲ୍ଡ, କି ଆଇ ଓନ୍ଲି ୱାର୍କ ଫର୍ ମନି and turn away from right. ଆଉ ଯେଉଁ ସତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋରାଲ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛି ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ମନି. Okay, now in quiet of my chair, the numbers blur and fade. Ashes on the ledger lies where profit once made. In old age, he reflects on the past. The once important numbers are now meaningless. Ashes on the ledger symbolizes regret, loss, and moral failure. Profit is now a reminder of what was lost, not gained. Okay, से कହୁଛି कि at the old age when he is remembering कि कौन से past रे केते पैसा कमाई थिला, तो से जिनसटा एबे ताको फेड नंबर रे देखा जाउचे. से कहउथला मोर एते मिलियंस रो प्रॉपर्टी अछि, एते मिलियन रे डील हैला, से जिनसटा एबे फेड हे जाय, ताको मने पडुनी केते मिलियन रे से डील करथिला. ओके, जो लेजर ऊपर सब बेले से खाता मेंटेन करथिले ता ऊपर एबे डस्ट थुआ अछि, डस्ट पडिछि. ओके, तो इस this also says a meaning, a deep meaning, access of ledger. Okay, ତମେ ଏଇ ହିସାବରେ ଭାବି ପାରିବ କି ତା ଉପରେ ଡଷ୍ଟ ଅଛି or that is set on fire. Okay, ସେ ଏବେ ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ledgerର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଏବେ. Okay, symbolizes regret, loss and moral failure. Okay, ଭିତରୁ ସେ failure feel କରୁଛି, morally loss ହେଇଯାଇଛି, କି ସେଇ part of life ଯଦି ସେ ଟିକେ enjoyment କରିଥାନ୍ତା, family time ଦେଇଥାନ୍ତା, other than counting figures, ତାର life କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା. Okay, he must might be he is now having a good family. Okay, ତାକୁ support କରିବା ପାଇଁ children ଥିବେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କେବେ time ଦେଲାନି family କୁ, he was just counting money. Okay, he was building gold. ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ life ର last moment ରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି. Profit is now a reminder of what was lost and not gained. ଏବେ ସେ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ହିଁ ତାକୁ ପେନ୍ ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ଲସ୍ କରିଛି ଲାଇଫରେ. ଓକେ, ମନି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ. ଓକେ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ମନି, ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଭାବ କି ସେଇ ମନିଟା, ସେଇ ପ୍ରାଇଡ଼ଟା ତୁମ ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ଡେନ୍ ହେଇଯିବ. ଓକେ, ଯେଉଁ ମନି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମନି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲୁ, ସେଇ ମନିଟା ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ. ଓକେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଦେବ, ତ ତମ ପାଇଁ ସେ ମନିର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଛି. ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଉଛି କି ମିଲରର ୱେ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ. ତମେ ଯଦି ଲକି ଅଛ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ତାର ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି. ତମେ ଯଦି ରିଚ୍ ଅଛ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ତାର ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି. ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତି. ଓକେ, ଆସେସ୍ ଅଫ୍ ଲେଜର. Okay, summary, access of leisure is a powerful reflection on moral compromises, guilt and the hollowness of unearned success. Arthur Miller's speaker tells of a life spent chasing profit only to realize that those choices damaged his integrity, his family and his peace. Though he appears successful on paper, his heart carries the weight of every compromise. In the end, the wealth is worthless and all that remains are ashes, symbols of ruin and regret. Okay, ସବୁଆଡ଼େ ashes ଅଛି, which symbolizes that कि ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପଛାଡ଼େ ଗଲା, ଓକେ, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ
compromise kala family time sangare health sangare se jinsa ta ebe taku show hochi. Okay, material success means nothing if it costs your soul. Every moral compromise leaves a mark, even if hidden. Family and self respect suffer when we betray our values. Okay, assess on the ledger reflects how success built on lies turns to dust. True fulfillment comes not from profit but from principle. Okay, ঠিক আছে. What kind of success did the speaker first describe? Artistic fame, legal victory, financial and professional success, political power. Okay, financial and professional success. The person who is portrayed in the poem, he is financially and professionally a successful person. Okay. What does summer rain imply about the money earned? Refreshing and welcome, heavy and lasting, sudden, cold and emotionless, gentle and pure. जो money earn करा है, that was like summer rain. ଆସିଲା ଆଉ ଗଲା ବହୁତ ଟାଇମ ଯାଏ ସେ ରେନ୍ ଟା ହୁଏନି ତ ଯୋଉ ମନି ଟା ସେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିକି ପାଇଥିଲା ସେ ମନି ଟା ଓକେ ଇଟ୍ ୱାଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ସମର ରେନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଗଲା ସଡନ୍ କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇମୋଶନଲେସ୍. What does the speaker regret? Not saving enough, selling his values cheaply, losing his job, not investing wisely. Okay? କୋଉ ଜିନିଷକୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରେ? Selling his values cheaply. Okay? जो values ଥିଲା जो principle से ଭଲ ହିସାବରେ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତା ସେଇ principle ଟାକୁ compromise କରିକି ଅଧର୍ମରେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ regret କରୁଛି. How did the speaker present himself to the world? As a teacher, as a beggar, as a smiling successful businessman, as a angry father, as a smiling successful businessman. से वर्ल्ड को देखिला मो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन अच्छे केते प्रॉफिट करछि बट डीप इनसाइड ताको फील होला कि एत्ती की प्रॉफिट बनैया पय एत्ती की मनी अर्न करिया पय ताको केते कॉम्प्रोमाइज करिया को पड़िला. ओके जेत्ती की रिच लोक थिबो ओके जेबे रिसेंट केस आस्थिला बिल गेट्स और ताको वाइफ डाइवोर्स हे गले तो they always run after money, they don't have any family time any emotional time. तो से जिनसटा भी बहुत मैटर करे लाइफ रे. ओके तमे देखिए बहुत रिच रिच लोक थिबे सेपरेट हे जिबा किछि दुख नथिबो पैसा रो बस टाइम एंड ओके ये सब जिनस. सो एज अ स्माइलिंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन निजो को रिप्रेजेंट कला. व्हाट डू द चिल्ड्रंस okay what do the children's softened tones suggest? Respect and admiration, distance and unease, joy and pride, sadness and grief. Children softened suggest distance and okay both family रे हुए बापा आसिले कौन हुए छुआ माने नुचि जीवे बही खोल देबे ओके काहे कि डरंती से ओपननेस नाही. ओके तो से जिंस डिस्क्राइब करे अनइज ओके डिस्टेंस अछि रिलेशन रे आ अनइजी अछंती तांको फेस करिया पय तो ए जिनसटा बापार बाइक रे हॉर्न सुनले आमे केमते बही धर दबो देखिले गाली करिवे खेलुछ बसिकी. ओके तो ए जिनसटा अछि. Next, what is meant by weighs my soul for gold? Gaining spiritual wisdom, comparing religion and business, choosing money over morals, counting his blessing. Okay, choosing money over morals. Okay, principle upre money choose करागला जे टाइम रे तो ताकू गिल्ट होची. ओके तो एतिकी थिला. नेक्स्ट क्लास हमें पढ़िबा अबाउट एमिली डिकिंसन तापरे पढ़िबा अबाउट वर्ड्सवर्थ. ओके एमिली डिकिंसन नेक्स्ट क्लास रे होबो. काली मॉर्निंग तमर ग्रामर अछि अटेंड करिवो क्लास टा. ओके एमसीक्यूज अछि किछिटा. ओके मॉर्निंग 8 am रे अछि. थैंक यू ऑल स्टडी वेल. ओके और सब सक्सेस करो लाइफ रे. थैंक यू.